me with love, I give the understanding by which they can come to me. Purport. In this verse, the word Buddhi Yogam is very significant. We may remember that in the second chapter, the Lord instructing Arjuna said that he had spoken to him of many things and that he would instruct him in the way of Buddhi Yoga. Now, Buddhi Yoga is explained. Buddhi Yoga is the Buddhi Yoga itself is action in Krishna consciousness, that is the highest intelligence. Buddhi means intelligence and yoga means mystic activities or mystic elevation. When one tries to go back to Godhead, and takes fully Krishna consciousness in devotional service, his action is called Buddhi Yoga. In other words, Buddhi Yoga is the process of which one gets out of the entanglement of this material world. The ultimate goal of progress is Krishna. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. One should know that the goal is Krishna. And when the goal is attained, then the path is slowly but progressively traversed and the ultimate goal is achieved. When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activities, he is acting in Karma Yoga. And when he knows the goal and seeks Krishna completely, when he knows that the goal, and when he knows the goal is Krishna, but he takes pleasure in mental speculations to understand Krishna. He is acting in Jnana Yoga. And when he knows the goal and seeks Krishna's completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in Bhakti Yoga or Buddhi Yoga, which is the complete yoga. This complete yoga is the highest perfectional stage of life. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. But if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. The qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. Tesham evanukam partam aham agyanajam tamah nashayami atma bhavasto jnana deepena bhashvatha. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. When Lord Chaitanya was in Banaras promulgating the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, thousands of people were following him. Prakashananda Saraswati, a very influential and learned scholar in Banaras at that time, derided Lord Chaitanya for being a sentimentalist. Sometimes Mayavadi philosophers criticize the devotees because they think that most of the devotees are in the darkness of ignorance and are philosophically naive sentimentalists. Actually, that is not the fact. There are very, very learned scholars who have put forward the philosophy of devotion. But even if a devotee does not take advantage of their literatures or of his spiritual masters, if he is sincere in his devotional service, he is helped by Krishna himself in his heart. So, the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. The only qualification is that one carry out devotional service in full Krishna consciousness. The Mayavadi philosophers think
that without discriminating, one cannot have a pure knowledge. For them, this answer is given by Supreme Lord. Those who are engaged in pure devotional service, even though they be without sufficient education and even without sufficient knowledge of the Vedic principles, are still helped by the Supreme Lord, as stated in this verse. Lord tells Arjuna that basically there is no possibility of understanding the supreme truth, the absolute truth, the supreme personality of God, and simply by speculating for the supreme truth. It is so great that it is not possible to understand him or to achieve him simply by making a mental effort. Man can go on speculating for several million years, and if he is not devoted, if he is not a lover of supreme truth, he will never understand Krishna or the supreme truth. Only by devotional service is the supreme truth uh, Krishna pleased, and by his inconceivable energy, he can reveal himself to the heart of the pure devotee. The pure devotee always has self to the heart of the pure devotee. The pure devotee always has Krishna within his heart, and with the presence of Krishna, who is just like the sun, the darkness of the ignorance is at once dissipated. This is the special mercy rendered to the pure devotee by Krishna. Due to the contamination of the material association through many, many millions of births, one's heart is always covered with dust of materialism. But when one engages in devotional service and constantly chants Hare Krishna, the dust quickly clears and one is elevated to the platform of pure knowledge. Ultimate goal, Vishnu, can be attained only by this chant and by devotional service and not by mental speculation or argument. The pure devotee does not have to worry about the material necessities of life. He need not be anxious because when he removes the darkness from his heart, everything is provided automatically by the Supreme Lord, who is pleased by the loving devotional service of the devotee. This is the essence of teachings of Bhagavad Gita. By studying Bhagavad Gita, one can become a soul completely surrendered to the Supreme Lord and engage himself in pure devotional service. As the Lord takes charge, one becomes completely free from all kinds of materialistic endeavors. Hare Krishna. Continue one more. परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम विभुम अजम विभुम अहुसत्वा मामीर्षय सर्वे देवर्षि नारदस्ते तथा अस्ति देवलो व्यासः स्वयं शैव ब्रविधि में। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप पर ब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित हैं। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति के कारण से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उसमें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम है, जो भक्ति के 9 विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान के शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती।
अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। उनकी इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं। उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसे पूर्ण ज्ञान केवल भागवत कृपा से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है तथा गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथा कथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं और कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। हरे कृष्ण। Right.